Good morning, everyone. Today, again, I will teach you Python programming. Remember, the Python programming is the main topic for your 11th and 12th class. This language I am going to teach you here also, and as well as I will teach you complete Python. I will teach you here. Obviously, there are a lot of things, but whatever I can cover as per syllabus, I will teach you. So, Python is the main programming language for your syllabus, and as my way of teaching is I share screen, so I'm sharing screen for you. And please let me know that what I have taught in the previous class. Any of you, please, those who have attended my previous class, I think I have completed continue and break statement. So अगर पता है तो please बता दीजिए. Python ideally. Continue and break I was teaching. Okay. So one more question I am giving on the continue question. लिखिए write a program WAP. Write a program to enter 10 numbers and add only positive numbers. Add only positive numbers. If negative number is entered, ignore it. Use continue statement in program. Use continue statement in your program. Okay? So this program I am going to write for you. So you have to find the sum of only positive numbers, and as the negative number appears, you have to leave that. Okay? That much you know. Have you understood the question? Please show thumbs up so that I'll go ahead. Understood. Okay. So पिन में कर लेता अपना वीडियो और अब आपको ढंग से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ. Okay. So enough. So here I'll use सबसे पहले आपको you have to generate a loop for I in range 1, 11, so the 10 time loop will execute. आप for I in range 10 भी कर सकते हैं तो 0 to 9 चलेगा loop. So now what you have to write here, n is equals to int input, enter a number. Now this a number, integer number, can be a positive number, can be a negative number. In case it is negative, okay, in case it is negative, so what we will do, if n less than 0, that is negative, so what you have to do, from here only you continue, or nahi to you just add the number s is equals to s plus n, and finally you print sum of only positive numbers. So this way. अच्छा 10 टाइम नंबर करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको मैं सिर्फ 3 टाइम्स करके दिखाना चाहता हूँ. 1 2 3 टाइम लूप चलेगा और 3 नंबर एंटर होंगे, देन मैं इसको 10 कर दूंगा. जस्ट सी द इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम. रन कर रहा हूँ. रन. चलो. सो एंटर अ नंबर. सपोज मैंने 5 दिया. एक मिनट, कुछ मिस्टेक है. n इज इक्वल टू एंटर अ नंबर. इफ बी कहां से आ गया. रन. ओके. एंटर अ नंबर 5. ये पॉजिटिव नंबर s नहीं डिफाइंड हो. देखो मिस्टेक छोटी छोटी हो जाती हैं, तो उससे डरना नहीं है. s इज इक्वल टू 0. रन. अब सही चलेगा. जो अभी मैंने एक और प्रॉब्लम ये है, कैंसिल, यहाँ पर s को डिस्प्ले नहीं कराया, s डिस्प्ले करा दिया. अब सारे करेक्शंस कर लिए. अब रन करना है. मिस्टेक्स तो आनी है, प्रोग्राम जो बनाएंगे कुछ ना कुछ हो सकती है. रन इट.
So positive number I am taking 5, then I am taking suppose 6 as positive, and next time I am taking -4. So actually मेरे numbers हो गए 5, 6, -4. इन सब का एडिशन में क्या हो जाता है 10. ठीक है 5, 6 + 5 नहीं सॉरी 4, 9, 6, 5, 11 -4 है ना 7. तो अब नहीं होगा अब की बल्कि 11 ही आंसर आएगा. Sum of only positive numbers. It will take only so negative को ऐड नहीं करेगा. So for that I have used continue. Have you understood the logic of the program? The logic of the program is here. Just see Rishiraj is good. So first one time loop चला, पहला number enter हुआ, second time loop चला, again एक number. So जब तक positive number add होगा, that will be added to it. But as the negative number is entered, ये loop यहीं से वापस चला जाएगा. It will not add the number. It will not add the number. ये वापस continue होके loop पे आ जाएगा. Have you understood, Kevin, Noel, Nichelle, all please. Parth. कंटिन्यू का मतलब होता है ब्रेक का मतलब होता है लूप को ब्रेक करना. कंटिन्यू मतलब होता है कि वहीं से लूप को वापस ले जाना. मैं बिल्कुल सिंपल हिंदी में बता रहा हूँ. कंटिन्यू मीन्स टू कंटिन्यू द लूप फ्रॉम दैट पोजीशन. दैट मीन्स लिविंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट नहीं आएगा जब वो कंटिन्यू यहीं से हो जाएगा, है ना. जैसे हमें सपोज XYZ प्लेस पे जाना है तो मैं Y प्लेस से ही वापस आ रहा हूँ, Z प्लेस को नहीं कंटिन्यू कर रहा. तो मतलब Y से फिर X पे आ रहा हूँ, फिर XYZ अगर मुझे जाना है तो जाऊंगा. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि when the positive number is entered and the condition is not matched here, that is 5 is not less than 0, so 5 is added, 6 is added, but -4 is not added because -4 is less than, that is negative number. A negative number is less than 0. Understood? मैं और क्या समझाऊं इसमें? Please show thumbs up so that I'll go ahead. Please. Understood all of you, shabash. So please note down this program and I will go for the next program. Okay. So till now I think I have covered. Today I will start teaching you something new. ये लूपिंग वगैरह हो गई. अब मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ. बीच में अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा. That's not an issue. So I am going to teach you list. Now before that you please tell, I have taught you about the mutable and immutable data type. Mutable and immutable data types. Mutable, okay. What is mutable data type, Michelle? Unmute yourself and you can give me the answer. I am asking you to unmute, Michelle. What is mutable data type? Please, jaldi. Turning pages, huh? Mike is so powerful, it's sketching. Any of you, please, mutable data type? Data which can be modified. Mutable data type, please. Which can change its value at its place. That is mutable data type. जो value को change करता है mutable type. And which cannot change value at its place is known as immutable. Please write it. If you have not written mutable, इसी में मैं comment में ही लिख रहा हूँ ताकि आपका प्रोग्राम भी खराब नहीं हो. Mutable data type. Actually, I am going for this mutable data type. Data type क्या होता है? Which can change its value at its place. Immutable data type which cannot change its value at its place.
That's the definition. Okay. So now I am going for this. So for that I will take a new definition here, that is list. So please write it, list. L-I-S-T. This is a new topic I am going to teach. Very interesting and बहुत प्रोग्रामिंग वाला है. थोड़ा सा अब आपको प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ना है. So here I am going to teach you list. अब यहीं से आपकी आगे प्रोग्रामिंग बढ़ेगी. लिस्ट डेफिनेशन लिखिए. इट इज एन ordered collection of data values. List, it is an ordered collection of data values. Data elements भी कह सकते हैं स्लैश लगा के. Data elements, each data value or elements, each data value or element has an index number. Each data value or data element has an index number. For example, अगर मैंने एक लिस्ट में वैल्यू डिफाइन किए 5, 6, 7, 10, 15. पहले तो ये समझो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स. व्हाट इज अ लिस्ट? डेटा इज अ रिकॉर्ड. डेफिनेशन लिख लो. इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप. It is a mutable data type. It can change its value at its place. So suppose ये जो डेटा मैंने लिया, this is 0, 1, 2, 3, 4. पहले आप डेफिनेशन लिख लो. List is a collection of data items, sequence of data items or data values. Each data value has an index number and it is a mutable data type and it can change its value at its place. Definition is completed. तो मैं explanation करूँ. Please show thumbs up so that I'll come to know the definition is completed. Okay. Now इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है? ये 5 इंडेक्स नंबर 0 पे है, 6 इज एट इंडेक्स नंबर 1, 7 इज एट इंडेक्स नंबर 2, 10 इज एट इंडेक्स नंबर 3 and 15 is at index number 4. Indexing starts with 0. Note it down somewhere. Indexing in a list, आगे आपके string में भी and tuple में भी सब में indexing starts with 0. So index number 0 पे पहला एलिमेंट and index number 4 पे इस लिस्ट के, that means total we have 5 elements. ये बात समझ में आ रही है? अब दो चीजों पे ध्यान रखना. वन इज द इंडेक्स नंबर एंड अनदर इज द डेटा वैल्यू. सो इंडेक्स नंबर एंड डेटा वैल्यू. अब थोड़ा सा मैं चाहो तो बोर्ड भी यूज कर सकता हूँ. मैं तो यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी पढ़ा सकता हूँ. मेरे बात अलग है. So I will share whiteboard also here. Cancel. Okay. I am sharing whiteboard for you. So अगर हम इस तरह से एक लिस्ट आइटम को लेते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 and 5 एलिमेंट्स हैं. इस बात को समझो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जो फर्स्ट एलिमेंट है 5 इज हियर. आदत नहीं है ना. 6 इज हियर, 7 is here, 10 is here, 15 is here. Okay, the index number of this element is 0, the index number is 1, 2, 3 and index number here is 4. Are you getting my point? इस drawing पे इतना ध्यान मत देना. This is index number 0, 1,
2 3 4. जस्ट शो थम्स अप सो दैट मैं ये बोर्ड में भी लिख दूंगा तो यही होगा, मगर मेरे पास जो फैसिलिटी है तो आई विल यूज इट. सो अब आपको बात को समझना होगा. जब लिस्ट में, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट. व्हेन यू विल राइट प्रिंट ए, यहीं पे लिखता हूं, प्रिंट ए, सो ये पूरी लिस्ट डिस्प्ले करेगा. दैट मीन्स इट विल डिस्प्ले द लिस्ट 4 6 7 10 एंड 12. और दूसरी बात, ये लिस्ट की जो पहचान है वो स्क्वायर ब्रैकेट है. रिमेंबर दैट a list elements are stored in square bracket. When I will teach you, चलो धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए ग्रेजुअली. सो A is equals to square bracket. अब मैं एक पॉइंट लिख लो, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए लिस्ट. लिस्ट इनिशियलाइजेशन, लिस्ट इनिशियलाइजेशन तो आपको समझ में आएगा. लिस्ट इनिशियलाइजेशन, आई एम डिक्लेयरिंग एन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजिंग अ लिस्ट. तो लिस्ट इनिशियलाइजेशन है A is equals to square bracket 4 5 10 12 20 कुछ भी एलिमेंट्स. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ये पहचान है कि ये लिस्ट है. रिमेंबर दैट इफ इट इज नॉट अ स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज अ राउंड ब्रैकेट, देन इट इज अ टपल, TUPLE. फिर बाद में उस पर डिस्कस करेंगे, अभी टपल डिस्कस नहीं करना. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू लिस्ट. सो व्हेन यू हैव टू डिक्लेयर, पहले आप डिक्लेयर क्या करते थे बेटा, लाइक A is equals to 10, इंडिविजुअल, वन एलिमेंट, वन डेटा आइटम, one data value. Now you are declaring and initializing, declaring A with 1 2 3 4 5 values. So A is having 5 values. So अब A की पहली वैल्यू कहां पर है? तो as I said, if you write print A, अभी इसको समझो इतना, तो ये सारी वैल्यू डिस्प्ले करेगा. मैं बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ, समझ जाना. So मैंने क्या बोला था, 4 5 10 12 20 all are displayed when you simply write A. प्लीज शो thumbs up. मैं इतनी देखना चाहता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. कुछ बच्चे आउट हो गए मेरी क्लास से. Sir, screen is not visible. चलती है क्या, बच्चे वहां चले जाते हैं? क्यों निश्चल, ऐसा क्यों होता है? बच्चे पहले अटेंड करते हैं अटेंडेंस के लिए और फिर लगता है आउट हो जाते हैं कि बाद में वीडियो देख लेंगे, ऐसा है ना? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने जब पढ़ाया था तो ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं. कोई बात नहीं, आप लोग ज्वाइन करो. जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगा बाद में वीडियोस अपना है क्या, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन आल्सो हियर. सो विल कम टू द पॉइंट हियर. सो आपने ये समझ लिया ना कि इस तरह से जब प्रिंट ए करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है पूरा. ना अगर हम एक इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे कि प्रिंट पहले एक वैल्यू करके एक वैल्यू चाहते थे, सेम वे आई वांट टू प्रिंट वन वैल्यू. व्हाट आई टोल्ड यू, द फर्स्ट वैल्यू इज स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 0. तो आई हैव टू राइट इट हियर A0. देन इट विल ओनली प्रिंट 4. व्हेन यू विल रन दिस प्रोग्राम, you see the result, you will only get 4 here. Is it clear? Indexing का मतलब समझो. A0 means first index, and when we'll print A0, it will display the value of first index. But when you will print A, it will display all the values from 0 to 4. Are you getting my point? Please show thumbs up so that I'll go ahead. Sir, screen. Oh, screen is not shared. Sorry. हाँ, मैंने वो ले लिया था ना. ओके सॉरी. तो पहले बोलना चाहिए था ना. रन, फिर से मैं रन कर रहा हूँ. When you print A, now screen is visible. The screen is shared. Okay. When you print A, it will display 4, 5, 10, 12, 20. But once you will print only A0, what happens? It will display 4 only. That is index number 0 पे जो value है. Now if you write it here, print A
Suppose 3. तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है? 0 1 2 3 12. Are you getting my point? 0 1 2 3 run. So see here, the result will come here as 0 का 4 and 12. A3 is 12. Please be with me so that I can teach you more points on list. So अभी मैंने list start किया है. Only how to declare a list, how to display a list, how to show the different values at a different index. Okay, good, shabash. Now we'll come to the next point. Now I want to change the value at index number 3, which is basically 10. I want to make it at 100 or anything else. So what I will write it here, I will write simply A3 is equals to 100 and press enter. Now when I'll print A, the result will come as 4 5 112 this way. Run. Okay. 4 5 10 100 and 20. Understood? This value zero one 2 3 4 0 1 2 3. हाँ, इंडेक्स नंबर 3 पे 12 था, सॉरी, वही मैं चौंक गया. इंडेक्स नंबर 3 पे 0 1 2 3 पे 12 था, तो नाउ 12 is changed to 100. Understood? 0 1 2 3 at 3. पहले मैंने 10 बोल दिया था गलती से. So now I have changed my word. 4 5 10 नहीं, 4 5 10 सेव रहेगा. 12 is changed to 100 because I have changed here A3. अगर A2 चेंज करते हैं, सपोज मैं A2 कर दूं, A2 is equals to 200. So unprint A. तो अब रिजल्ट आप डिफरेंट देखेंगे. Run module. Okay. So 4 5 200 100 and 20. Is it clear? Okay. शाबाश, आपका बात बिल्कुल समझ में आ रही है. So what is a list? List is a mutable data type. It's a collection of data items, data values, data elements. Each data element has an index number and it's a mutable data type so that you can change value at its place. तो आप देखिए प्लेस पे वैल्यू चेंज हो रही है. पहले 10 थी 200 हो गए, पहले 12 थी 100 हो गई, एंड सो ऑन. ओके, क्लियर है? ओके. अब नेक्स्ट मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं कि आप इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं, तो कोई लूप लगा के भी तो सारी वैल्यू डिस्प्ले की जा सकती है. तो यू कैन डू दैट. एक तो तरीका मैंने सिंपल बताया, प्रिंट ए, बट हम अपने हिसाब से प्रिंट करना चाहते हैं इसको, इंडेक्स की वैल्यू. I am removing this. I think you must have noted, or you please take the screenshot so that I'll go ahead. Video वैसे है आपका. Now just for few more minutes I'll teach you because next class will start within 5 to 7 minutes. So what I am doing here, I am generating a loop for. अब मुझे ये प्रिंट है, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला प्रिंट मुझे अच्छा है. इस प्रिंट में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर टाइम बीइंग आई एम कीपिंग इट, बट नाउ आई विल चेंज. फॉर आई इन range 0, 5 0 1 2 3 4 I want. Okay, so here I'll write print a of I this way. So what happens, explanation if you want, I'll explain you also. पहले इसको समझ लो. Run. So देखो 4 5 10 12 20 all values are displayed. Okay, I have removed all that change value, मैंने हटा दी थी, मैंने पूरे स्टेटमेंट हटा दिए, सिर्फ इतनी वैल्यू. रन 4. अब देखिए इसमें जो वैल्यू आ रही थी प्रिंट में इसी फॉर्मेट में आएगी, बट व्हेंस यू आर यूजिंग द लूप आप इसको डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं. 4 इन फर्स्ट लाइन, 5 इन सेकंड लाइन एंड सो ऑन. सो इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना कि इसका फॉर्मेटेड रिजल्ट नहीं आएगा. इट विल ओनली डिस्प्ले अ लिस्ट which is initialized as 4 5 10 12 20. but once you are using loop तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स अपने हिसाब से कहीं पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में भी कर सकते हैं. एंड आई थिंक आई वांट टू राइट मोर हियर. आई वांट टू राइट हियर वैल्यू एट इंडेक्स नंबर.
ये भी मैं लिखना चाहता हूँ. I can do it. एक प्रोग्रामर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो कुछ भी कर सकता है. Now see here, the much better result you will get. Value at index number 0 is equals to 4, value at index number 1 is equals to 5, value at index number 2 and 4. समझ में आया? तो अब आप अल्टीमेटली समझ जाएंगे कि इस स्टेटमेंट का कोई खास मतलब नहीं है. It's not showing you a proper result. So it's better if you write value at index number, value use for loop. For loop से आसानी से प्रिंट हो जाए. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. In next class I am going to teach you more about list and the programming part. Now how it is showing, इतना और आपको एक्सप्लेन कर दूं. सबसे पहले I equals to 0 होगा. सबसे पहले I equals to 0 है तो प्रिंट क्या हो रहा है बेटा? प्रिंट हो रहा है वैल्यू एट इंडेक्स नंबर. और I 0 है तो 0 आ गया, फिर उसके बाद इक्वल है तो इक्वल आ गया, एंड देन फाइनली A0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A0? दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग A0. तो A0 इज व्हाट? 4. So it is displaying 4 here. That way value at index number, समझ रहे हैं? Index number 1 is equals to 5 and so on, and finally आ रहा है value at index number, क्योंकि लूप ऐसा चल रहा है बेटा. Index number 4 is equals to 20. ये कब हुआ? जब I की वैल्यू 4 हुई. दिस वे. सो ये प्रोग्राम के साथ आप रखना चाहो तो रख लो, रन करके वैल्यू वही आने वाली है. So that's all today. I will meet in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day, and please attend classes and you ask questions so that in case of doubts, I will also explain the doubts. जो भी problems हैं आप पूछा करो, मेरे को अच्छा लगेगा. Okay, take care of yourself. Bye.